Good evening, Sneha ji. Hello, everyone. Please check the voice. So in the last video lecture, we discussed about the monosaccharide. We discussed about the disaccharide. We discussed the glycemic index. So we discussed the monosaccharide, disaccharide. What do you mean by monosaccharide? What do you mean by the disaccharide, polysaccharide? Then polysaccharides are divided into homopolysaccharide, heteropolysaccharide. We discussed the glycemic index, certain foods with glycemic index, and we discussed the dietary fiber and importance of dietary fiber. Apart from that, we discussed the isomers of monosaccharides, specifically the glucose we discussed. So these are the important topic. What are the important BAQs from this topic? BAQ means short questions, mark questions, that includes the enumerate monosaccharide, enumerate the aldoses, enumerate the ketose sugar, then enumerate the non-reducing disaccharide, for example, sucrose, trehalose, enumerate the reducing disaccharide, maltose, lactose, isomaltose, these are the reducing. Okay, so we'll just revise the previous section. Previous lecture we'll revise first, then we'll move to the major topic, the most important topic from the carbohydrate chemistry, that is heteropolysaccharide. In other word, it is also known as glycosaminoglycan, GAG. So mucopolysaccharide, heteropolysaccharide, or glycosaminoglycan, these are similar. So this is very important. SAQ can be asked as long answer question or can be asked as a clinical case of mucopolysaccharidosis in your professional examination, as well as in your professional examination. And it is also important topic or top rated topic for the entrance examination, PG entrance examination, glycosaminoglycans, heteropolysaccharides, or mucopolysaccharides. Okay, we'll discuss that. Before going to that, we'll discuss the we'll revise the monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, homopolysaccharide, glycemic index, dietary fiber, that we will revise. Okay, see, this is topic of discussion today, homopolysaccharides and GAGs. Mainly, this is very important topic. The top rated topic, GAGs, also known as mucopolysaccharides, also known as heteropolysaccharides. Heteropolysaccharides. Saccharide means sugar. Here, saccharide means sugar. Mono means single. Saccharide means sugar. The simple sugar which can't be hydrolyzed further. एक unit जिसको हम further hydrolyze नहीं कर सकते. The disaccharide. Di means two. Saccharide means sugar. Two sugar units connected by the glycosidic linkage. Oligosaccharide means 3 to 10 units. Oligosaccharides, and polysaccharides means more than 10. When these units, component or constituent units are same, they are known as homopolysaccharide, and when they are different, they are known as heteropolysaccharide. And heteropolysaccharide is the important short answer question, also important for the BAQ, to mark BAQ, also important LAQ from this carbohydrate chemistry. And the clinical cases from the carbohydrate chemistry, there are two important clinical cases. One is the Hurler syndrome clinical cases, that include first one is the Hurler syndrome, second one is the Hunter. These are the important clinical cases from the topic, Hurler syndrome. Remember, she is always first. She is always first. So Hurler is the first mucopolysaccharidosis and Hunter is the second. Remember, she always first. Hurler, Hunter. Okay. So these are the two important mucopolysaccharidosis. So बाकी भी है, लेकिन ये दो ही हमको याद रखना है क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकल फीचर्स दोनों के लगभग सेम है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है,
ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है. So from the typical clinical feature, that is coarse facies, the coarse facies, then hepatosplenomegaly, the skeletal involvement, musculoskeletal involvement, involvement, and mental retardation is there. So multisystem involvement is there in Hurler and Hunter syndrome. We'll discuss that. Before going to that, we'll revise the topic. As all of you know that carbohydrates, these are the hydrates of carbon. How will you define the carbohydrates? They are polyhydroxy aldehyde or ketones or compound which gives them on hydrolysis. So they are classified according to the sugar units. If sugar unit is single, it is monosaccharide. If two connected by the glycosidic linkage, they are known as disaccharide. If 3 to 10 units are there, they are known as oligosaccharide, and more than 10 units, they are known as polysaccharides. So polysaccharides further divided into homopolysaccharides, heteropolysaccharides. So disaccharides, they are divided into reducing disaccharide, non-reducing disaccharide. And monosaccharides, they are divided according to the number of carbon atoms. They are trioses, tetros, pentose, hexose, heptose. Also nanos is there, N-acetyluramic acid, the nanos. Okay, so triose, tetros, pentose, hexose, heptose. And according to the functional group, if the functional group is aldehyde, they are known as aldose. And if the functional group is keto group is there, they are known as ketose. Okay, aldoses, ketoses. So these are the examples of, means this is aldotriose, means glyceraldehyde, 3 carbon, and aldehyde as a functional group. Erythrose, ribose, xylose, glucose, glucoheptose. These are the aldoses. Dihydroxyacetone, erythrulose. Ulose represents the keto sugar. Ulose. Erythrulose, ribulose, xylulose, fructose, pseudoheptulose. These are the keto. तो कोई आपको पूछेगा नहीं थ्योरी के एग्जाम में मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स लिखो एंड एनुमरेट द फंक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट. ये जनरली पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, तो आपको थोड़ा सा इसके हायर वर्जन पूछे जाएंगे. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट, एनुमरेट द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको पूछे. मुझे नहीं लगता कि आपको ये पूछे जाएंगे क्वेश्चंस. ये वाइवा में पूछे जाते हैं जब आपको आप आंसर नहीं कर पाते कुछ भी, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पे आते. क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट, then how will you define the carbohydrate, enumerate some monosaccharides. ये जब बेसिक वाइवा में एग्जामिनर जाता है तब ये क्वेश्चंस आपको पूछते हैं. okay? So see in the isomers, stereoisomer D glucose and L glucose, these are the stereoisomers. Compound having the same formula but having the different spatial arrangement is known as stereoisomer. D glucose and L glucose, it is discussed with the help of the orientation of OH and H with respect to the penultimate carbon atom. So OH, if it is to the right, it is D glucose. If it is to the left, it is L glucose. Functional isomer, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा है. Functional isomer, when the aldehyde is the functional group, it is known as when aldehyde is the functional group, it is known as aldoses, and when the keto group, the functional group, it is known as ketoses. So, example glucose, fructose. Epimers, they differ around the single carbon other than anomeric carbon. Anomeric carbon मतलब जिसको functional group attach होता है, जैसे ग्लूकोज के इसमें C1. तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, these are epimers at C4. This is MCQ for first professional examination. मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो पीसीटी रहेंगी, फर्स्ट टेस्ट रहेंगी, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. थोड़ा सा इजियर नोट पे अगर क्वेश्चन पेपर सेट किया गया तो galactose and glucose, they are epimer at C4. They differ around the C4, and galactose means glucose and mannose, they are epimers around the C2. They differ with respect to OH and H arrangement at C4. Here galactose and glucose, here glucose and mannose, it is C2. See, so just one, just we'll discuss 6. So this is structure of glucose. This is aldehyde group. Okay, 6 carbons are there. And see now, this is D glucose. So epimers, galactose and glucose, they are epimer at C4. So this is first, second, third, fourth, fifth, sixth. So
they will differ around this OH. So in galactose, you will see like this. This is epimer at C4, and in mannose, it is like this. In mannose, they will differ in this C2, around the C2. Okay. So epimer, they differ around the single carbon atom other than anomeric carbon. So epimers, then optical isomer, when the beam of plane polarized light is passed through a solution containing this compound. If it is rotated to the right, they are known as dextro. If it is rotated to the left, they are known as leo, are also represented by the plus and minus sign. Anomers means, anomers means when the arrangement of the OH hydroxyl group, when the arrangement of hydroxyl group, it too is opposite to that. See, alpha means opposite. If it is opposite to the CH2OH, it is known as alpha D glucose, and if it is on the same side of CH2OH, it is known as beta D. So this is anomers. This is around the C1 anomeric carbon in case of glucose. Okay, so these are the isomers case of monosaccharides. Then we already discussed the disaccharide. Disaccharides means two unit connected by the glycosidic linkage. The reducing disaccharide, non-reducing disaccharide. Reducing disaccharide includes lactose, maltose, isomaltose, cellobiose. These are the reducing disaccharide. While the non-reducing, sucrose and trehalose, so they use the Benedict test negative. They will not give the oxazone, the crystals. They will not give the oxazone crystals because the functional groups, for the property, reducing property, the free functional groups are required. Here free functional groups are involved in the glycosidic bond formation. For example, sucrose is made up of alpha 1 beta 2. There is alpha 1 beta 2 glycosidic linkage in the sucrose. So this is of glucose and this is of fructose. So functional group in case of glucose, it is at the C1, and functional group in case of fructose, it is at the C2. So both the functional groups, they are involved in the bond formation. So it is a non-reducing sugar. It does not answer the oxazone test, sucrose. Trehalose, also a non-reducing sugar, because here alpha 1 glycosidic linkage, glucose plus glucose. And both the functional groups, they are involved in the bond formation. So there is no free functional group. So it is a non-reducing. Here the functional groups are free. One of the functional group is free, so that's why reducing, it gives the reducing test positive. So these are the reducing disaccharide. Lactose gives the powder puff shape, and maltose gives sunflower shaped oxazone. Then coming to the homopolysaccharides. Now homopolysaccharides means they are composed of more than 10 units, and these units are similar. For example, glucose, 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 and so on. So they are known as homopolysaccharide. These are the examples of homopolysaccharide: starch, glycogen, cellulose, dextrine, dextran, inulin, chitin. These are the examples of homopolysaccharide. So you may get BAQ on this part. So enumerate the homopolysaccharides. In that you have to write the name only if it is enumerate. So write down the name only: starch, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रान, इनोलिन, कार्टिन. अगर आपको चार नाम पूछे गए तो आपको जितने आते उतने लिखो. डोंट रिस्ट्रिक्ट यूर सेल्फ टू 4, क्योंकि एक आधा हमारा गलत भी हो गया और नीचे 5-6 नाम है तो वो आपको 2 मार्क दे के जाएगा. तो ऐसा मत करना. अगर आपको 2 पूछे तो 2 ही बताने, नहीं हमको जितने आते ना उतने लिख देने का वहां पे, अगर एन्यूमरेट टाइप क्वेश्चन है तो. ठीक है. स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रान, इनोलिन, कार्टिन. नाउ अगर हम ये लिख रहे हैं कि ये पॉलीसेकेराइड है, मतलब देर आर मोर देन 10 यूनिट्स, मोर देन 10 यूनिट्स आर देयर, तो उसका कंपोजिशन हमको लिखना है. इट इज ए पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज. इट इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट. स्टार्च, स्टोरेज form of the carbohydrate in the plant. Glycogen, it is storage form of the carbohydrate in case of animals. It is stored in the liver and muscle. Cellulose, it is also known as dietary fiber. Cellulose is also known as dietary fiber because there is, in cellulose there is bond. Which bond is there in the cellulose? Beta 1,4 glycosidic bond is there, and we do not have the enzyme which can digest the beta 1,4 glycosidic linkage. So there we lack the cellulase enzyme. In animals there is cellulase. So cellulose is a dietary fiber in case of humans, because humans lack
beta 1,4 glycosidase, that is cellulase. Okay, so cellulose, hemicellulose, these are the dietary fibers. We already discussed the advantages of dietary fibers because it increases the bulk of stool and relieves the constipation, decreases the absorption of glucose from the intestine, decreases the absorption of cholesterol from the intestine. So it is very, very important in the diet management of diabetes mellitus, coronary artery diseases. Also, it prevents us from the colon cancer, diverticulosis, and other gastrointestinal disturbances. So, it is very useful. Cellulose, hemicellulose, gum, pectin, lignin, resistant starch, lactulose, which is a disaccharide, some oligosaccharides, they are useful in the treatment of constipation. Okay. Now, dextrine, it is a partial degradation product of starch. Starch is degraded into dextrine. Dextrine is degraded into maltose. Maltose then hydrolyzed into glucose and glucose. Okay. So, it is a partially degradation product of starch. Dextrine, intermediate in the degradation of starch. Dextran. Now, you may get BAQ on this part. BAQ. Enumerate the functions of dextran. 2 मार्क क्वेश्चन, जब से 2 मार्क क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बड़ी रहती, ज्यादा रहती है ना. तो एन्यूमरेट होमोपॉलीसैकेराइड बोला तो हमारे लिए इजी है ना. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. सो इट इज ए 2 मार्क क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को हम डिस्कस करेंगे. तो यह डेक्स्ट्रॉन, यूजेस ऑफ डेक्स्ट्रॉन. so dextran is a homopolysaccharide of glucose. It is a branched homopolysaccharide and it is polymer of glucose. It is high molecular weight compound. It is used as a plasma volume expander in the hypovolemic shock. hypovolemic shock मतलब क्या, जब ब्लड लॉस होता है तो उसको रिप्लेसमेंट करके डेक्स्ट्रॉन उसको देते हैं, चढ़ाते हैं पैरेंटल आईवी, डेक्स्ट्रॉन देते हैं हाई मॉलिकुलर वेट. इट इज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर. जब ब्लड लॉस होता है तब ये पेशेंट को देते हैं. ऑल्सो इट इज यूज टू गिव द पैरेंटरल न्यूट्रिशन and it is also a content of eye drops as it have some lubricative action. It is used in the eye drop dextran. So also it is anti-thrombolytic agent. So these are the functions of dextran. Synthetic dextran, it is used as a high molecular, it is a high molecular weight compound used as a प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर इन द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. मतलब ब्लड लॉस में प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांड करने के लिए डेक्स्ट्रॉन देते हैं. और दूसरा कब देते हैं डेक्स्ट्रॉन, अभी रिवीजन चल रहा है पिछले क्लास का, इसलिए मैं फास्ट हूँ थोड़ा. फिर जैसे ही हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड पे शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा सा पेस हम स्लो कर देंगे. तो डेक्स्ट्रॉन, what are the functions of dextran? It is a plasma volume expander. Second, antithrombolytic agent. Third, as a lubricant, it is used in the eye drops. So it is high molecular weight branch carbohydrate polymer of glucose, dextran. So plasma volume expander, antithrombotic activity. Okay. Inulin. Inulin is a polymer of fructose. This is MCQ, very, very important MCQ for your first terminal examination. Remember it, this is for the first terminal examination, also for your university examination. Inulin is a polymer of fructose. Is fructose polymer also known as fructosan, means polymer of fructose. Apart from it is used to measure the glomerular filtration rate because it is freely filtered through the glomerulus and neither absorbed nor secreted by the renal tubule. So it gives the exact value of glomerular filtration rate, that is 125 ml per unit, ml per minute. Okay, inulin. So it is a gold standard substance for measurement of glomerular filtration rate. Apart from this, inulin is also a dietary fiber. Is a fiber, dietary fiber. Remember this. In chitin, it is found in the exoskeleton of insects and some fungus or yeast. It is found. Chitin, it is a polymer of N-acetyl-glucosamine. N-acetyl-glucosamine. So it is found in exoskeleton of some insects. Now we'll discuss the amylose and amylopectin. Also we'll discuss the glycogen. See. So you may get BAQ on this topic. Brief answer question of 2 marks. Differentiate between amylose and amylopectin. Remember, there is no need to draw a diagram. This is a 2 mark question. There is no need to draw a diagram. अगर आपको आती है तो निकालो, लेकिन इस पे पढ़ो ही मत क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मार्क्स है नहीं. ठीक है.
So it is component. Starch is made up of amylose and amylopectin. Amylose, these are the straight chain molecule. This is branched. There is alpha 1,4 glycosidic linkage in the amylose, while in the amylopectin there is alpha 1,4 glycosidic linkage and also alpha 1,6 glycosidic linkage at the branch point. So suppose this is glucose and so on. So at the branching point means this point there is alpha 1,6 glycosidic linkage. This point alpha 1,6 and rest of the molecule it is alpha 1,4 glycosidic linkage. This is alpha 1,4 glycosidic linkage. So it has both alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic linkage. It constitutes near about 20% of the starch. It is 80% of the starch. 20%, 80%. This is water soluble. Soluble in water. This is insoluble in water. Insoluble in water. So this is difference between amylose and amylopectin is present in the starch. Starch is the plant carbohydrate. It is a storage form of the glucose in the plant. Starch. Okay, like glycogen in the animal. Like glycogen in the animal. Now, what is glycogen? See, what is glycogen? Glycogen, it is a branched polymer of glucose, highly dense, compact, globular. It is a storage form of the carbohydrate, storage form of the glucose in the animals. It is stored in the liver and muscle. So glucose is stored as glycogen. Is stored as glycogen in liver and muscle, and it is utilized as a source of glucose during the meal. Means in between the meal, it is a source of glucose by the glycogenolysis. By the breakdown of the glycogen in the liver, it provide us glucose in between the meal. In between the meal, glucose level is maintained by the glycogenolysis, that is breakdown of glycogen in the liver. So liver and muscle, it is present glycogen, it is highly branched. There is alpha 1,4 glycosidic linkage and alpha 1,6 glycosidic linkage also at the branch point in the glycogen. So this is all about the homopolysaccharide. Now we'll start with the today's topic. We'll start with the today's topic of discussion, that is glycosaminoglycans. Heteropolysaccharides, glycosaminoglycans. GAG. Heteropolysaccharide, mucopolysaccharide. They were first isolated from the mucin. That's why the name mucopolysaccharides. Mucopolysaccharide, also known as mucopolysaccharide. Glycosaminoglycans, mucopolysaccharide. मेरे साथ साथ बोलो. Glycosaminoglycans, also known as MPS, mucopolysaccharides, also known as heteropolysaccharides. They are heteropolysaccharides. Heteropolysaccharide. Okay, there are many examples of heteropolysaccharide. For example, agar, which is used as a bacterial culture medium, agarose, which is used in the DNA electrophoresis. Then pectin is also a heteropolysaccharide, but the important heteropolysaccharides or mucopolysaccharides are glycosaminoglycans, and there are 6 very, very important examples of glycosaminoglycans apart from and they have very, very important role in our body. They are present in the extracellular matrix, abundantly present in the extracellular matrix, that is loose connective tissue. So they have wide variety of role in our body. Mucopolysaccharides, heteropolysaccharides are glycosaminoglycan, and this is very, very important SAQ, short answer question, as well as LAQ from this topic. And clinical cases, Hurler, Hunter, and all mucopolysaccharidosis, they are connected with the GA, glycosaminoglycans. Right? Okay. So see, heteropolysaccharide. Poly means many, saccharide means sugar. Hetero means different. The constituent sugar units are different. Now, heteropolysaccharides, they are made up of
They are made up of repeating disaccharides. Repeating disaccharides. They are composed of two main monosaccharide derivatives. First one is amino sugar. Amino sugar plus uronic acid. They are composed of repeating disaccharide unit. मतलब कोई भी अगर आपने GAG लिया, they are composed of repeating disaccharide unit. मतलब उसका composition क्या रहेगा? Amino sugar plus uronic acid. Amino sugar plus uronic acid. Amino sugar plus uronic, ऐसा उसका composition रहेगा. मतलब these heteropolysaccharides, they are composed of रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट. डाइसेकेराइड मतलब दो. ये दो जो यूनिट है ये रिपीट होते जाएंगे. रिपीट मतलब अमाइनो शुगर यूरोनिक एसिड, अमाइनो शुगर यूरोनिक एसिड, अमाइनो शुगर यूरोनिक एसिड. So here amino sugar here in the glycosaminoglycans is of two types. It is of two type. One is glucosamine, glucosamine और galactosamine. तो या तो ग्लूकोजामाइन रहेगी, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन रहेगा, या तो गैलेक्टोसामाइन. ठीक है, ये दो में से एक रहेगी, या तो ग्लूकोसामाइन या तो गैलेक्टोसामाइन. और यूरोनिक एसिड, इट इज मेजॉरिटी, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस द यूरोनिक एसिड इज डी ग्लूकुरोनिक एसिड. मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट इज डी ग्लूकुरोनिक एसिड, 90% डी ग्लूकुरोनिक एसिड, एंड समटाइम्स इट इज एल आयोडुरोनिक एसिड which is epimer of glucuronic acid. Most of the time this is D-glucuronic acid. So composition, it is amino sugar plus uronic acid, and most of the time the uronic acid is D-glucuronic acid. Okay. Now there are some exception and exceptions are MCQ. जैसे आपने मूवीज देखी होंगी या सीरीज देखी होंगी, कोटा फैक्ट्री है ना, उसमें बोलते हैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बोले तो एमसीक्यू है ना. तो ऑल ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन contain uronic acid except keratan sulfate. Except keratan sulfate. Now, what are the examples of glycosaminoglycans? It includes the examples of glycosaminoglycans: hyaluronic acid, chondroitin sulfate, dermatan sulfate, heparin, heparan sulfate, and keratan sulfate. These are the 6 important glycosaminoglycans: hyaluronic acid, chondroitin sulfate, dermatan sulfate, heparin, heparan sulfate, and keratan sulfate. So these are the 6 important glycosaminoglycans. They were first isolated from the mucin, and that's why the name mucopolysaccharides. That's why the name mucopolysaccharides. They are heteropolysaccharide because they are composed of different sugar units. Amino sugar, uronic acid. They are repeating disaccharide. दो यूनिट ऐसे रिपीट होते जाएंगे. अमाइनो शुगर, यूरोनिक एसिड, अमाइनो शुगर, यूरोनिक एसिड एंड ऑल. तो ये कैसे याद रखने का, इसका कंपोजिशन ये मैं बताऊंगा आपको. इनके फंक्शन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से एक एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा, आपकी कोई भी एग्जाम रहे उसमें से ये जीएजी में से एक एमसीक्यू पक्का रहेगा. ठीक है. तो हमको ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन प्रायोरिटी वाइज अगर हम टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हमको सबसे पहले कौन सा पढ़ना है एग्जाम के लिए, नॉट फॉर द नॉलेज. नॉलेज आपको मोनोसेक्राइड से चालू करना पड़ेगा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, देन पॉलीसेक्राइड. लेकिन जब एग्जाम का वक्त आता है सो प्रायोरिटी इज जीएजी. फर्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल केसेस रिलेटेड विद द जीएजी, हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम. बिल्कुल छोड़ने का नहीं हर्लर हंटर अभी, क्योंकि अभी रिवाइज हो गया, पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया. और ये रिवाइज सिलेबस में ना इनके क्वेश्चंस जो है जिनको लगता है कि अभी रिपीट नहीं होने चाहिए, दे विल गो फॉर द ऑड क्वेश्चन. So Hurler, Hunter, they are the odd questions, odd clinical cases, not a common clinical case. These are the odd clinical cases, but features are very unique to this. Means coarse faces, hepatosplenomegaly, then skeletal abnormalities, mental retardation. ये सब larger tongue, okay, abnormal face. So these are the features of like mucopolysaccharidosis. So we'll see one by one.
विल सी द कंपोजिशन ऑफ वन बाय वन ग्लाइकोजमिनोग्लाइकॉन. सो एक एमसीक्यू मैंने कौन सा बताया पहले आपको, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोजमिनोग्लाइकॉन कंटेन यूरोनिक एसिड, कंटेन यूरोनिक एसिड एक्सेप्ट केराटिन सल्फेट, एक्सेप्ट केराटिन सल्फेट. इसमें यूरोनिक एसिड है ही नहीं. द कंपोजिशन इज एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन प्लस गैलेक्टोज. मुझे जितना याद रहता उतना ही आपको बताऊंगा मैं. एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन प्लस गैलेक्टोज का कंपोजिशन में यूरोनिक एसिड नहीं है. ओके. और दो लोग ऐसे हैं जिसमें आइडोरोनिक एसिड है. तो दिस इज डर्मेटन सल्फेट, इट हैज एल आइडोरोनिक एसिड, आइडोरोनिक एसिड. ऑल्सो हिपेरिन हैज एल आइडोरोनिक एसिड एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड, दोनों रहता है उसमें. हिपेरिन में डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एल आइडोरोनिक एसिड. जिसका नाम एच से चालू होता है, जैसे हाइलोरोनिक एसिड, हिपेरिन, हिपेरन सल्फेट, ये तो अलग ही है. इसको इसमें पकड़ने का नहीं है क्योंकि इसका कंपोजिशन है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन प्लस गैलेक्टोज. इसका अलग से करके रख रख देने का. now जिसका नाम एच से चालू होता है, जैसे हाइलोरोनिक एसिड, हिपेरिन और हिपेरन सल्फेट, दे कंटेन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, दे विल कंटेन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन. बाकी के बचते कौन, कॉन्ड्राटन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, दे कंटेन गैलेक्टोसम, दे कंटेन गैलेक्टोसामाइन. And D-glucuronic acid is present in all except keratan sulfate. There is no uronic acid, and except dermatan sulfate there is L-iduronic acid which is epimer of glucuronic acid. अभी कंपोजिशन याद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कंपोजिशन याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए ये पूछे जाते हैं. ठीक है. नाउ विल डिस्कस वन बाय वन, विल डिस्कस देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल डिस्कस देयर functions, and then we will discuss their disorders. Okay. See, hyaluronic acid. What is distribution? What is use of hyaluronic acid? Where it is distributed? First, what is composition of hyaluronic acid? क्या composition of hyaluronic acid जब मैंने आपको बताया, इसका composition कैसे आपको डिसाइड करना. अगर ये H से चालू होता है, मतलब एक अमाइनो शुगर जो है इसमें, दैट इज एन एसेटिल ग्लूकोजामाइन, एन एसेटिल ग्लूकोसामाइन. Okay. Now the uronic acid, it is D uronic, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन प्लस डी ग्लूकोरोनिक एसिड. ये रिपीट होते जाएगा, दिस विल रिपीट. Okay. And why these mucopolysaccharides or GAGs are, they are shock absorbent? Why they are slippery in nature? Why they are slippery in nature? Hyaluronic acid present in the aqueous humor of the eye and synovial fluid. Synovial fluid कैसे रहता? Resilient nature है ना. क्यों shock absorbent? क्यों क्यों रहता? See, these glycosaminoglycans, they are major part of connective tissue, or they are major part of the loose connective tissue extracellular matrix. They are slippery in nature, they are shock absorbent. स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को कैसे हमने दबा दिया तो प्रेस होता और छोड़ दिया तो पूरा रिकॉइल हो जाता उसका, है ना. जैसे स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज, दे हैव कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब द वाटर. स्पॉन्ज, स्पॉन्ज कैसे पानी निकाल दिया तो सिकुड़ जाता, और पानी अगर पानी में डाल दिया तो पूरा ऐसे ये हो जाता by absorbing the water, like that. This is component of extracellular matrix. This is very very important property of this glycosaminoglycan. They are slippery in nature, they are mucus in nature. Why? Because they contain, because glycosaminoglycan, all glycosaminoglycans, they contain negatively charged groups. They contain negatively charged groups. So negatively charged groups in case of glycosaminoglycans are carboxyl group, acetyl group, sulfate, chondroitin sulfate, dermatan sulfate, N-acetyl glucosamine, N-acetyl galactosamine. They contain carboxyl acetyl sulfate group. So these are the negatively charged group, and they repulse each other. They repulse each other. Negative, negative repulsion is there. Repulsion is there. That's why they are mucus in nature. They are mucus in nature. They use as a shock absorbent.
they absorb the shock. Okay, so negative repulsion is there, so they are mucus in nature, they are shock absorbent. As synovial fluid, vitreous humor of the eye, the important function. So remember, so because of more negative, these are polyanions. Polyanions means negatively charged ions. Polyanions, anions. They are negatively charged because of these groups, and they repulse each other. So they act as a shock absorbent, negative repulsion. So that's why they are slippery. They are slippery in nature. They are slippery in nature. First, hyaluronic acid. The composition of hyaluronic acid is N-acetyl glucosamine plus D-glucuronic acid. Hyaluronic acid is the only glycosaminoglycan without sulfate. There is no sulfate in the hyaluronic acid. Okay, N-acetyl glucosamine plus D-glucuronic acid, the hyaluronic acid. The distribution, it is distributed. Hyaluronic acid, it is present in the synovial fluid of the joint, synovial fluid of joints, vitreous humor of the eye, vitreous humor the eye. Then also it is present in the skin. So it is present in the skin, but widely distributed in the synovial fluid and vitreous humor of the eye. Hyaluronic acid, shock absorbent. They act as a shock absorbent. They act as a lubricant. They act as a lubricant in the synovial fluid. Now the functions, in the functions of hyaluronic acid, functions, shock absorbent, lubricant action. Then it is important in cell migration. Also, it is important in cell migration of tumor cell. Cell migration in the morphogenesis. Also important in the cell migration of tumor cells. Cell migration and wound repair. Wound repair mechanism. It is important. Hyaluronic acid. Hyaluronic acid. It is present in the bacteria. In humans, it is distributed in the synovial fluid, vitreous humor of the eye. It is present in the skin. There is no sulfate in the hyaluronic acid. It is important as a shock absorbent lubricant because it is a content in the synovial fluid. The resilient nature of the vitreous humor and synovial fluid is because of hyaluronic acid. It is important in the cell migration and wound repair. It is important in the wound repair, hyaluronic acid. Okay, so it is important. Hyaluronic acid, glycosaminoglycan. Glycosaminoglycans, it is present in the connective tissues, extracellular matrix, important components of proteoglycans. प्रोटीओग्लाइकॉन एग्रीगेट क्या रहता है, प्रोटीओग्लाइकॉन मोनोमर क्या रहता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हाइलोरोनिक एसिड कंपोजिशन इज, फिर से रिवाइज करो मेरे साथ साथ, आप लिख के भी देखो क्या, क्योंकि ये कंपोजिशन इतने इजीली याद नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, तब एक के नीचे एक आएंगे कंपोजिशन तो आपको याद रहेंगे. मैंने क्या बोला था, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, ये सब में रहेगा जिसका नाम एच से चालू होगा. केराटिन सल्फेट को हमने बाजू में रखा है. ठीक है, तो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, और सारे में डी ग्लूकोरोनिक एसिड रहेगा. और ये जो डाइसैकेराइड है ये रिपीट होते जाएंगे. देयर इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन बिटवीन दिस टू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. डोंट रिमेंबर द लिंकेज, कौन सा रहता वो भूल जाओ. ठीक है, तो 1,4 रहता, 1,3 रहता, कौन सा रहता वो भूल जाओ. So N-acetyl glucosamine plus D-glucuronic acid connected by the glycosidic linkage. So this disaccharide unit will repeat again and again to form a polysaccharide, heteropolysaccharide hyaluronic acid. Shock absorbent, lubricant, cell migration, wound repair. These are the function distributed in synovial fluid, vitreous humor of the eye and skin. Apart from these, along with the chondroitin sulfate, with chondroitin sulfate, which is important component in the cartilage, it is important for compressibility of the cartilage in the weight bearing joint. Compressibility of cartilage in weight bearing joints.
the important function hyaluronic acid with chondroitin sulfate. So here chondroitin sulfate is the main. So chondroitin sulfate and hyaluronic acid, they are important in the compressibility of cartilage in the weight bearing joint. So remember this. This is all about the hyaluronic acid. This is all about the hyaluronic acid. Got it? This is hyaluronic acid. Now moving to the second, chondroitin sulfate. Chondroitin sulfate. Glycosaminoglycan, widely distributed. It is present mainly in the cartilage, bone, and tendon. It is present in cartilage, bone, and tendon. The composition, chondroitin sulfate, is N-acetyl galactosamine, plus D-glucuronic acid. N-acetyl galactosamine plus D-glucuronic acid connected by the glycosidic linkage. Distribution, it is distributed in the chondroitin sulfate, cartilage, bone, and tendon. Cartilage, bone, tendon. Is present in cartilage, bone, and tendon. It is important for what is important function of chondroitin sulfate? Is important for shape and structure of this tissue. Shape and structure of this tissue. It is important for compressibility of cartilage in the weight bearing joint. Chondroitin sulfate, important constituent in the cartilage. Okay, chondroitin sulfate, important constituent in the cartilage, widely distributed mainly in the cartilage, bone, and tendon. Function, shape, and structure of this cartilage, bone, and tendons. Chondroitin sulfate, N-acetyl galactosamine plus D-glucuronic acid. Got it? So this is second, that is chondroitin sulfate. Now third one is the dermatan sulfate. Dermatan sulfate. So this dermatan sulfate composition is N-acetyl galactosamine, amino sugar is N-acetyl galactosamine, connected by the glycosidic linkage with L-iduronic acid. This is CQ. L-iduronic. This is composition of dermatan sulfate. It is widely distributed. It is mainly present in the skin. Distribution, it is present in the skin. Derma is present in the skin. It is present in the walls. It is present in the walls, blood vessels, dermatan sulfate. Skin, walls, blood vessels. So it is important in the shape and structure of the skin, heart walls, blood vessel, shape and structure. So all glycosaminoglycan, they are important composition of extracellular matrix, that is loose connective tissue. All are extracellular, they are present extracellularly. Only heparin is present intracellularly in the mast cell. Okay, so extracellular compartment, loose connective tissue, they form the major bulk of loose connective tissue. Okay, dermatan sulfate, skin and heart walls, they are important in maintaining the shape and structure. Along with the keratin sulfate and dermatan sulfate, they are important constituent of cornea. Important constituent of cornea. Main is the keratin sulfate, cornea. Keratin sulfate is the main component in the cornea. But apart from this, dermatan sulfate is also there in the cornea. And they are responsible for the transparency of cornea. The main is the keratin sulfate. So if keratin sulfate is not in the option, remember this, if it is not in the option, then answer is dermatan sulfate. Okay. So this is dermatan sulfate. Okay. L-iduronic acid, this is MCQ here. Now the next one is the heparin. Next one is the heparin. Anticoagulant. Anticoagulant. Heparin anticoagulant. What is composition of heparin?
is N-acetyl glucosamine plus L-iduronic acid. Also, D-glucuronic acid is there. Initially, there is D-glucuronic acid, but by the action of the epimerase, this D-glucuronic acid is converted into L-iduronic acid. So it contains 90% L-iduronic acid is there in the heparin, N-acetylglucosamine plus L-iduronic acid. Okay. So heparin is an anticoagulant. It is distributed. It is present in the blood, lung, liver, skin. Is mast cells. Mast cells. This is distribution of the heparin. It is anticoagulant. Apart from the anticoagulant, this is MCQ. Second important function is, apart from this anticoagulant, second function is it causes release of lipoprotein lipase enzyme from endothelium, from capillary endothelium. Is responsible for release of lipoprotein lipase enzyme from the capillary endothelium. The first function is anticoagulant, second is release of lipoprotein lipase from capillary endothelium. The function, heparin composition, N-acetylglucosamine plus L-iduronic acid, or maybe D-glucuronic acid is also there. So it is N-acetylglucosamine plus L-iduronic acid. Heparin, anticoagulant, and release of LPL means lipoprotein lipase from the capillary endothelium. It is distributed in blood, lung, liver, mast cell. Heparin, it is anticoagulant. Heparin, it is also present in intracellularly. It is present in the mast cells. It is present in the mast cell. Okay. So this is all about the heparin. Now the important one, that is heparan sulfate. Heparan sulfate. Heparan sulfate, the composition is N-acetylglucosamine plus D-glucuronic acid. Also contain L-iduronic acid, but D-glucuronic acid is the major composition. Heparan sulfate. It has multiple functions and very important for the MCQ. Heparan sulfate, very important for MCQs. Heparan sulfate, N-acetylglucosamine plus D-glucuronic acid in the majority of cases, and sometimes it is L-iduronic acid. So it is distributed. It is present in the basement membrane of the kidney. It is present in the basement membrane of the kidneys. Also, it is present in the endothelium, capillary endothelium. It's present in the synaptic vesicles. Synaptic vesicles. Basement membrane of the kidney, endothelium, capillary endothelium, and synaptic vesicle. It is present. What are the important functions of heparan sulfate? Function. First, it acts as a cell surface receptor. Cell surface receptor is important in cell communications. It is present on the cell surface, so it acts as a cell surface receptor. It is important in cell communication. It is important in cell communication. Second important function is the lipoprotein lipase enzyme is anchored to the capillary epithelium. Anchored मतलब पता है ना, वो जहाज का कैसे उसको वो एक जगह पे रहना चाहिए, उसके लिए उसको नीचे में वो एंकर डालते. तो इट इज the lipoprotein lipase enzyme, it is anchored to the capillary endothelium with the help of heparan sulfate, negatively charged heparan sulfate. Lipoprotein lipase enzyme is attached with capillary endothelium by heparan sulfate. Then it is responsible for charge selectiveness. Point is very important of glomerular basement membrane.
is important for charge selectiveness of glomerular basement. What is the meaning of this sentence? See, albumin. Albumin is low molecular weight compound. Albumin बहुत छोटा होता है. It can easily pass to the glomerular basement. ग्लोमेरुलस से इजीली फिल्टर हो सकता, लेकिन वो होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज निगेटिवली चार्ज, बिकॉज देर इज negatively charged heparan sulfate in the glomerular basement. Albumin is negatively charged, so negative repulsion is there, and in normal condition albumin does not appears in the urine. Albumin यूरिन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. आपने यूरिन के लिए टेस्ट किया, आपका कॉलेज चालू हो गया, आपने यूरिन के लिए टेस्ट की, एबनॉर्मल यूरिन के लिए. आपने यूरिन के लिए, यूरिन प्रोटीन के लिए कौन कौन सी टेस्ट की? हिट कोएगुलेशन टेस्ट की, आपने हेलर्स टेस्ट की, आपने सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट की. आपने ये सब टेस्ट किसके लिए की? प्रोटीन इन द यूरिन, अल्बुमिन इन द यूरिन. कौन से डिसीज में मिलता है अल्बुमिन एंड प्रोटीन इन द यूरिन? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिलता है. क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ये चार्ज है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, बिकॉज डैमेज टू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, द चार्ज ऑन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज लॉस्ट. And because of loss of negatively charged heparan sulfate, there is appearance of albumin in the urine, that is known as albuminuria or proteinuria, which occurs in the nephrotic syndrome or glomerulonephritis. और उसके वजह से फिर बाकी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे अल्बुमिन लॉस हो गया तो इडिमा हो जाएगा, है ना, स्वेलिंग हो जाएगी, इडिमा, बिकॉज ऑन्कोटिक प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुलिंग ऑफ द fluid into the extracellular compartment. Got it? So this is charge selectiveness of glomerular basement membrane. Very, very important. Heparan sulfate. The glomerular basement membrane is negatively charged because of heparan sulfate. And because of this negative repulsion, albumin does not appears in the urine, does not process the glomerular basement membrane. अगर छोटा सा है फिर भी वो क्रॉस नहीं होता, क्योंकि निगेटिव रिपल्शन की वजह से. लेकिन जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज हो जाता और उसमें हिपेरन सल्फेट लॉस हो जाए, लॉस ऑफ पोडोसाइट्स आर देयर, लॉस ऑफ हिपेरन सल्फेट इज देयर, so that increases the excretion of albumin in the urine. So it is important in the charge selectiveness of glomerular basement membrane. आपको ये वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप इनिशियल क्वेश्चंस के आपने अगर जवाब दिए तो आपका वाइवा यहाँ तक जाएगा. अगर आपका वाइवा यहाँ तक गया तो समझ लेना आपका स्कोर 10 में से 9, 10 में से 10, 10 में से 8 इस पे रहेगा, अगर यहाँ तक आपका वाइवा जाएगा तो. द वाइवा विल स्टार्ट. व्हाट आर द एबनॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, उसमें आपने प्रोटीन बता दिया. फिर व्हाट आर द टेस्ट डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन. फिर आपने 3 टेस्ट के नाम बताए, हिट कोएगुलेशन, सल्फोसैलिसिलिक एसिड, हेलर्स टेस्ट. उसके बाद में एग्जामिनर पूछता है इन विच डिसीजेस अल्बुमिन यूरिया इज देयर और प्रोटीन यूरिया इज देयर. फिर आपने बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज प्रोटीन यूरिया और अल्बुमिन यूरिया इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. तब आप बताओगे कि अल्बुमिन छोटा सा रहता है, लेकिन वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होता, क्योंकि निगेटिवली चार्ज हिपेरन सल्फेट इज देयर. या तो आप बताओगे निगेटिवली चार्ज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, देयर इज negative repulsion and albumin normally does not appears, but because of damage to the glomerular basement membrane in the nephrotic syndrome or glomerulonephritis, albumin appears in the urine. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाई देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो इट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज हिपेरन सल्फेट. ओके, so this is complete answer. So second function, lipoprotein lipase enzyme. This is very very important. It is important. Lipase it acts on the lipid, and it degrades the lipid, means it degrades the triglyceride into fatty acid and glycerol. So lipoprotein lipase enzyme is attached to the capillary endothelium by the anchored to the heparan sulfate. Okay, so these are the two important function. It acts as a cell surface receptor. It is important in cell adhesion and communication. It is important in cell adhesion and communication. Okay, so this is important heparan sulfate. Okay, heparan sulfate. तो क्या क्या हो गया? हाइलुरोनिक एसिड, दूसरा कॉन्डर्टन सल्फेट, देन डर्मेटन सल्फेट, देन हिपैरिन, देन हिपैरन सल्फेट, नाउ द केराटन सल्फेट. These all are important points for MCQ. Now keratan sulfate. Keratan sulfate. Okay, the composition is N-acetyl glucosamine,
plus galactose. N-acetyl glucosamine plus galactose. So here there is no uronic acid. Very, very important MCQ. No uronic acid. अभी तक सब में यूरोनिक एसिड था, इसमें ना डी ग्लूकुरोनिक है ना ये लाइडोरोनिक, तो इसका एकदम से अलग ये है कंपोजिशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉर्निया, कॉर्निया ऑफ द आई, एंड कॉर्निया मतलब जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है दैट इज कॉर्निया ऑफ द आई, एंड सेकंड इज द कार्टिलेज, कार्टिलेज। Keratin sulfate 1, it is present in the cornea, and keratin sulfate 2, it is present in the cartilage mainly. Cartilage, both 1 and 2 both are present. So cornea, it is the function, important function is important for transparency of cornea. Transparency of cornea. This is the major keratin sulfate. Also, dermatan sulfate contributes to the corneal transparency. The main is the keratin sulfate. Remember, so cornea transparency is because of keratin sulfate. It is also important in shape and structure of the cartilage. It is important in shape and structure of the cartilage. So this is all about the keratin sulfate. कितने कितने हमने डिस्कस किए? 6 डिस्कस किए। कौन कौन से डिस्कस किए? 6। मेरे साथ साथ बोलो कौन से 6 डिस्कस किए हमने? तो पहला हाइलुरोनिक एसिड, दूसरा कॉन्डार्टिन सल्फेट, तीसरा डर्मेटन सल्फेट, चौथा हिपैरिन, पांचवा हिपैरिन सल्फेट, छठवा केराटिन सल्फेट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि हमको ये 6 याद आने चाहिए, है ना। एनुमरेट द ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन्स, अगर ऐसा बोला तो हमको ये 6 याद आने चाहिए। कौन कौन से? फिर से बोलो, मेरे साथ साथ बोलो आप लोग भी। हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्डार्टिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, देन हिपैरिन, हाँ नेक्स्ट हिपैरिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट। So glycosaminoglycan. What are the other synonyms for glycosaminoglycan? Heteropolysaccharides, mucopolysaccharides. They were first isolated from the mucin. That's why they are known as mucopolysaccharides. Why they are slippery? Why they are resilient? Why they are shock absorbent? Because they contain many. They contain many negatively charged groups that includes carboxyl group, acetyl group, and sulfate group. So many carboxyl, acetyl, and sulfate groups are there, and because of these groups, negative repulsion is there, and they act as this, they are slippery in nature, they are mucus, they are shock absorbent, they are lubricant. Okay, they are widely distributed, they are present in the connective tissue. Loose connective tissue means extracellular matrix. They are major component of proteoglycan. Proteoglycan means protein plus glycosaminoglycan. Protein plus glycosaminoglycan. In this protein plus glycosaminoglycan, in the proteoglycan, carbohydrate content is more than 95%. So it is major component of extracellular matrix. Remember this, major component of extracellular matrix. Okay. So once again, we'll revise this. This is important short answer question. This is important LAQ. This is important for the MCQ. In the priority wise, this should be your first question in the examination. जो आप पढ़ोगे वो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये हेट्रोपोलिसैकेराइड और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान। तो सारा बायोकेमिस्ट्री आपको प्रायोरिटी वाइज ही पढ़ना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले। बाकी टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो स्टार्ट विद मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले जब आप पढ़ रहे हो तो स्टार्ट विद द ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान फर्स्ट। ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। सी glycosaminoglycans means heteropolysaccharide. Heteropolysaccharide means they are composed of different sugar units. Polysaccharide means more than 10 units are there. So what do you mean by glycosaminoglycans? They are repeating disaccharide composed of amino sugar, uronic acid. तो अमाइनो शुगर, यूरोनिक एसिड, अमाइनो शुगर, यूरोनिक एसिड। चला ट्रेन का डब्बा। कुछ कुछ ट्रेन के डब्बे रहते ना जिसमें सेकंड एसी भी रहता और थर्ड एसी भी रहता, या तो फर्स्ट एसी भी रहता और सेकंड एसी भी रहता, लाइक दैट। सो रिपीटिंग डाइसैकेराइड, इट इज रिपीटिंग डाइसैकेराइड, अमाइनो शुगर, यूरोनिक एसिड, अमाइनो शुगर, यूरोनिक एसिड। जिन जिनका नाम एच से चालू होता सब में एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है। केराटिन सल्फेट को हमने पहले ही बाजू में निकाल दिया क्योंकि इसमें यूरोनिक एसिड है ही नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यह लाइडोरोनिक एसिड काय में रहेगा? डर्मेटन सल्फेट में, इतना याद रखो, ठीक है। 90% केसेस में डी ग्लूकुरोनिक एसिड रहेगा। तो अभी कंपोजिशन याद करके देखो, मेरे साथ साथ करो। हाइलुरोनिक एसिड, एच से चालू हो रहा मतलब एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन।
मोस्ट कॉमन यूरोनिक एसिड कौन सा है? डी ग्लूकुरोनिक एसिड, तो उसमें डी ग्लूकुरोनिक एसिड रहेगा। कॉन्ड्रोटेन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, दोनों में एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन नहीं रहेगा, दोनों में एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन रहेगा। ओके, कॉन्ड्रोटेन सल्फेट में यूरोनिक एसिड क्या रहेगा? डी ग्लूकुरोनिक एसिड। डर्मेटन सल्फेट में क्या रहेगा? यल हाइड्रोनिक एसिड। हिपेरिन कंपोजिशन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन plus L hydronic acid and some amount D-glucuronic acid is also there. Heparin sulfate, N-acetyl glucosamine plus D-glucuronic acid. Keratan sulfate, N-acetyl glucosamine plus galactose. ठीक है, so this is composition. Now distribution. Hyaluronic acid distributed in synovial fluid, vitreous humor of the eye, synovial fluid of the joint, vitreous humor of the eye. Chondroitin sulfate, cartilage, bone, tendon. Dermatan sulfate, skin, heart valves, blood vessels. Heparin, it is lung, liver, blood, skin, mast cells. Then heparin sulfate, it is present in the synaptic vesicles. It is present on the cell surface. Then it is present in the endothelium, capillary endothelium. It is present in the basement membrane of the glomerulus. Then keratin sulfate, it is present in the cornea. It is present in the cartilage. So this is distribution. Now function. Hyaluronic acid is important shock absorbent, lubricant, cell migration. It is important. It is important in the wound repair. Remember, in the wound repair, तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री की। पहला हाइलोरोनिक एसिड, दूसरा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और तीसरा जिंक। ये तीन चीजें वुंड रिपेयर में इंपॉर्टेंट है। वुंड रिपेयर में कौन सी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है? हाइलोरोनिक एसिड एक, दूसरा विटामिन सी, और तीसरा जिंक। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब ये आएगा विटामिन सी और जिंक, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा फिर से। ओके, तो Chondroitin sulfate, shape and structure of cartilage, bone and tendon. Dermatan sulfate, shape and structure of the skin, blood vessel, heart valves. Heparin, anticoagulant, also for the attachment of release of lipoprotein lipase from the capillary endothelium. Heparin sulfate, attachment, the lipoprotein lipase anchor to the capillary endothelium with the help of heparin sulfate. Then it acts as a cell surface receptor. It is important in cell adhesion and communication. Heparin sulfate, it is important for charge selectiveness of glomerular basement membrane. Keratin sulfate, present in the cornea, present in the cartilage, important in shape and structure of this tissue, important in the transparency of the cornea. So these are the 6 important glycosaminoglycans. Okay, so see, repeating disaccharide, amino sugar, uronic acid. They are slippery in nature because of negatively charged group, carboxyl, acetin, and sulfate group. The negative repulsion is there, so they are mucus in nature, they are shock absorbent. Hyaluronic acid present in synovial fluid, vitreous humor of the eye. Shock absorbent, lubricant, important in cell migration and wound repair. Along with chondroitin sulfate, here major contribution is by the chondroitin sulfate. It is important in compressibility of cartilage, the weight bearing joint. The hyaluronic acid does not contain the sulfate group. Chondroitin sulfate, it is widely distributed. It is present in the cartilage, bone, and tendon. An important function is it maintain the shape and structure of cartilage, bone, and tendon. Chondroitin sulfate maintain the compressibility of the. It is important for compressibility of cartilage in the weight bearing joint. Synovial fluid is also important, so hyaluronic acid is also important. Dermatan sulfate present in the skin, skin, blood vessels, and heart valves. So it is important in maintaining the shape and structure of these tissues. Along with the keratin sulfate, it is important in the cornea. Then heparin, anticoagulant, and it is important in release of lipoprotein lipase enzyme. It is present in the lung, liver, blood, and the mast cells. So intracellularly, it is present in the mast cell. Okay. Otherwise, it is present in connective tissues or the loose connective tissues or extracellular matrix. Heparin sulfate present in the basement membrane of the glomerulus, endothelium, capillary endothelium, synaptic vesicles. So it is important as a cell surface receptor, important in cell adhesion, and it is important in cell adhesion and communication. The lipoprotein lipase enzyme is anchored to the capillary endothelium with the help of heparin sulfate. It is important in the charge selectiveness of glomerular basement membrane. Keratin sulfate, it is important in the cornea and cartilage, and this is important MCQ. It is important for the transparency of the cornea. Important for the transparency of the cornea. Now proteoglycan. What do you mean by proteoglycan? So proteoglycan
and the glycoprotein. Proteoglycan means protein plus glycosaminoglycans. So here carbohydrate content, carbs is more than 95% in proteoglycan. While in glycoprotein, the carbohydrate content is less than 5%. Protein content is more in the glycoprotein. So here proteoglycan is important. What do you mean by proteoglycan monomer, proteoglycan aggregate, which is a component of extracellular matrix? Now see this structure. मैं तो बोलता अगर ग्लाइकोसमिनो ग्लाइकॉन पे क्वेश्चन आया ना ये स्ट्रक्चर निकाल लो आप, आपको मार्क्स आसानी से मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. तो दिस इज हाइलोरोनिक एसिड. ये स्ट्रक्चर निकाल लो आपको इजीली मार्क्स, क्योंकि जिन्होंने हार्पर पढ़ा है उनको ये डायग्राम पता है ना. तो ये डायग्राम को वेटेज है. दीज आर द कोर प्रोटीन्स. जो मैं लाइन निकाल रहा हूँ, दीज आर द कोर प्रोटीन्स. दे आर लिंक्ड विद द हाइलोरोनिक एसिड बाय नॉन कोवेलेंट अटैचमेंट विद द हेल्प ऑफ लिंक प्रोटीन. तो इसको अटैच नहीं दिखाना है. दे आर नॉन कोवेलेंटली. दिस कोर प्रोटीन इज अटैच टू द हाइलोरोनिक एसिड बाय द नॉन कोवेलेंट अटैचमेंट विद द हेल्प ऑफ लिंक प्रोटीन्स. नाउ दिस इज कोर प्रोटीन. दिस इज नोन एज कोर. ये जो है इसको बोलते हैं कोर प्रोटीन. ये प्रोटीन है. दिस इज प्रोटियोग्लाइकॉन एग्रीगेट. इसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकॉन एग्रीगेट. सारे प्रोटियोग्लाइकॉन एक जगह पे आ गए, इसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकॉन एग्रीगेट. दिस इज कोर प्रोटीन. दिस इज हाइलोरोनिक एसिड. ठीक है. So now this is core protein. To this core protein there is attached glycosaminoglycans. There is attached glycosaminoglycans. This is glycosaminoglycan. Suppose this is chondroitin sulfate, or this is somewhat dermatan sulfate is also there. Chondroitin sulfate, dermatan sulfate. This is core protein. This is chondroitin sulfate, dermatan sulfate. So this is monomer. This is known as proteoglycan monomer. ये जो है स्ट्रक्चर आपको दिख रहा. This is bottle brush appearance. This is bottle brush appearance. This is important MCQ for the NEET PG entrance examination. And this bottle brush, this is proteoglycan monomer. ये एक यूनिट है प्रोटियोग्लाइकॉन का. प्रोटियोग्लाइकॉन मतलब क्या होता है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन. उसमें 95% मोर देन 95% इज द कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन्स. So this is chondroitin sulfate, dermatan sulfate. This is hyaluronic acid. दिस इज कोर प्रोटीन. ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा. बॉटल ब्रश. Bottle brush appearance. This is proteoglycan monomer. This is core protein. This is glycosaminoglycan. And this core protein is attached to the hyaluronic acid with the help of link protein. Non-covalent attachment with the help of link protein. समझता है तो याद रखो, नहीं तो छोड़ दो. तो ये सब ऐसे हर एक इसको आपको ऐसा ये निकालना है. And this glycosaminoglycan is attached to the core protein with the help of trisaccharide, that is galactose galactosilulose. With the help of trisaccharide unit, this glycosaminoglycan is attached to the core protein. So इतना याद रखो. प्रोटियोग्लाइकॉन मतलब प्रोटीन प्लस ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन मीन्स ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट. इसमें 95% कार्बोहाइड्रेट रहता, मोर देन 95%. और ग्लाइकोप्रोटीन में लेस देन 5% रहता.
प्रोटीन ज़्यादा रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन. So this is proteoglycan monomer. It is composed of core protein plus glycosaminoglycans plus the trisaccharide, linked trisaccharide प्लस लिंक ट्राइसैकेराइड. ये हो गया प्रोटियोग्लाइकॉन मोनोमर. और सब जब एक जगह पे हाइलुरोनिक एसिड के साथ कनेक्टेड रहते हैं उसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकॉन एग्रीगेट. उसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकॉन एग्रीगेट. ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकॉन एग्रीगेट. दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अभी ये सब हो गए, ये हो गए उनके एग्जाम्पल, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, कॉन्ड्राटिन सल्फेट, हिपेरन सल्फेट. Now, if there is problem in the degradation of these compounds, suppose hyaluronic acid, keratin sulfate, dermatan sulfate, chondroitin sulfate, heparin sulfate, heparin, heparin, और कौन सा बचा? 1 2 3 4 5 6. Suppose there is problem in the degradation. Suppose these molecules are not degraded. They are degraded by the lysosomal hydrolases. If there is problem in lysosomal hydrolases, so these compounds does not degrades. They will not degrade, and there is accumulation of this compound in the tissues, in the lysosomes of various tissues. For example, spleen, liver, brain, bones, skeletal tissues, bones, joints, etc. So in the deficiency of lysosomal hydrolase, there is accumulation of this GAG. GAG accumulates in the spleen, liver, bone, brain, joints. So there is multi-system involvement that causes number of clinical feature and diseases, and these diseases or these disorders, they are known as mucopolysaccharidosis. They are known as mucopolysaccharidosis. Disorders due to lack of lysosomal hydrolases. In these disorders, there is accumulation of these glycosaminoglycans in the various tissues that causes multisystem involvement, is known as mucopolysaccharidosis. Known as mucopolysaccharidosis. There are number of disorders in the mucopolysaccharidosis, but two are important, that is Hurler and Hunter. Hurler syndrome, Hunter syndrome. The features are coarse faces, मतलब डेफिनाइट, मतलब ये नहीं रहेगा. डिप्रेस नेजल ब्रिज, द एज एन क्या बोलते हैं उसको, एलानेजी जो है वो ऐसे वाइडन रहेंगे. ये ओवर ग्रोथ रहेगा, टंग एनलार्ज रहेगी. ये डेफिनाइट फीचर्स नहीं रहेंगे, तब ऐसे एकदम ऐसे क्लियर फीचर्स नहीं रहेंगे. दैट इज नोन एज कोर्स फेसिस. देन स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट इज देयर, सो देयर इज ग्रोथ रिटार्डेशन, है ना. स्केलेटल डिस्प्लासिया विल बी देयर. एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब कुछ पार्ट बड़ा रहेगा, कुछ छोटा रहेगा स्केलेटल में. तो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज विल बी देयर. स्किन लीजन्स विल बी देयर. Hepatosplenomegaly will be there. Hepatosplenomegaly. Deposition in the brain, specifically the heparan sulfate. If this compound accumulates in the brain, it causes the mental retardation. So mental retardation, corneal involvement, retinal involvement, tongue enlargement, hepatosplenomegaly, skeletal dysplasia, that is known as dysostosis multiplex. Skeletal dysplasia will be there. Hepatosplenomegaly will be there. So number of features will be there. So that they are included in the mucopolysaccharidosis. Due to deficient enzyme is the lysosomal hydrolase that break down these glycosaminoglycans, and accumulation of glycosamin there. It is known as mucopolysaccharidosis. So main hai Hurler or Hunter. Remember, Hurler is the first. Remember, she is always first. So Hurler is the first and Hunter is the second mucopolysaccharidosis. This is first feature.
देन हंटर रिक्वायर्स विजन, हंटर को हंट करने के लिए विजन लगती है, तो इट हैज क्लियर कॉर्निया, रिमेंबर दिस फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हंटर हैज क्लियर कॉर्निया, और उसको एक्स भी लगती है, क्या बोलते हैं उसको, कुलाडी भी लगती है, उसको एक्स भी लगती है, सो इट इज एक्स लिंक नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव, हंटर इज द एक्स लिंक डिसीज, it has clear cornea and the deficient enzyme in hunter is the iduronate sulfatase, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो हमको सिर्फ दो याद रखने हैं, रिमेंबर हमको सिर्फ दो याद रखने हैं, हमको पूरे के पूरे याद नहीं रखने हैं। फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रिमेंबर हर्लर एंड हंटर ओनली। मुझे जहां तक लगता है 99.9% टाइम आया तो हर्लर और हंटर ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। या तो सिर्फ आप जस्ट मेंशन करो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इन दोनों में एक ही क्लियर, एक ही फीचर है क्लिनिकल जो डिफरेंट है, दैट इज क्लियर कॉर्निया, हंटर हैज क्लियर कॉर्निया एंड हर्लर में कॉर्नियल क्लाउडिंग, कॉर्नियल हेजीनेस और कॉर्नियल ओपेसिटी रहती है। कहाँ पे, हर्लर में ना कॉर्नियल ओपेसिटी रहती है, हंटर में कॉर्निया क्लियर रहता है, ये क्लिनिकल फीचर है। Deficient enzyme in the hurler, it is MPS1, mucopolysaccharidosis 1. The deficient enzyme in the hurler is the iduronidase. This enzyme is uh, defective in the hurler syndrome. While hunter, it is iduronate sulfatase. Is iduronate sulfatase. This is X-linked recessive. This is autosomal recessive. Okay. So there is accumulation of dermatan sulfate and heparan sulfate. So these enzymes, they are involved in the degradation of dermatan sulfate and heparan sulfate. So they accumulates. As the heparan sulfate accumulates, it causes the mental retardation. It causes mental retardation, coarse faces, means depressed nasal bridge, widened alanasy, then tongue enlargement, protruding the jaws, so corneal clouding, hepatosplenomegaly, skeletal deformity, short stature. These are the features of mucopolysaccharidosis. So here, see here corneal clouding is the important feature here, corneal clouding in hurler, while there is no corneal clouding in the hunter. So बाकी के फीचर जो है वो दोनों में सेम है। अगर आप लोग डिफरेंशिएट कर पाए तो करो, नहीं तो जस्ट लिखो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस हर्लर और हंटर, कोई गलत नहीं देगा आपको, ठीक है। हर्लर और हंटर म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ डर्मेटन सल्फेट एंड हिपेरन सल्फेट इन द यूरिन, excretion of dermatan sulfate and heparan sulfate. And what is the reason for these symptoms? Because of accumulation of these glycosaminoglycans in the various tissues that causes these symptoms. ठीक है, so सब क्वेश्चन में आएगा why there is hepatosplenomegaly. So there is accumulation of dermatan sulfate, there is accumulation of heparan sulfate. Why there is mental retardation? There is accumulation of dermatan sulfate and heparan sulfate in the brain. So remember Hurler syndrome and Hunter syndrome, ये दो ही हमको याद रखने, ठीक है। So the rest of the mucopolysaccharidosis are, so see, this is the difference between hurler and hunter. This is iduronidase deficiency. This is iduronate sulfatase deficiency. This is autosomal recessive. This is X-linked recessive. Hepatosplenomegaly, ugly face, corneal clouding. This is the feature which is differentiating feature. बाकी के सब same है. Okay. This is differentiating feature, autosomal recessive. This is enzyme defect. So here enzyme defect is iduronate sulfatase. No corneal clouding, important clinical feature, and it is X-linked recessive. बाकी के सारे जब लगभग सेम रहते हैं, हर्लर एंड हंटर, फर्स्ट सेकंड, ये दो याद रखने हैं। नाउ दीज आर द अदर्स, दिस इज टाइप 3 सैनफिलिप्पो, टाइप 3 म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस सैनफिलिप्पो, then Morquio type 4 mucopolysaccharidosis, then type 6 is there, that is Morutilamy. So type 6 is there, Morutilamy, and type 7 is Sly disease. Type 7 is Sly disease. So these are the mucopolysaccharidosis. These are the defective enzyme. अगर आपको याद रख सकते हो तो रखो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना किसी को याद नहीं रहता। तो हर्लर, हंटर, iduronidase, iduronate sulfatase, iduronate sulfatase, 1 2 hurler, hunter, iduronidase, iduronate sulfatase. Okay, so these are the symptoms and these are the mucopolysaccharidosis. तो कौन कौन से है, हर्लर, हंटर, सैनफिलिप्पो, मार्क्यो,
Moretti-Lamy and Sly disease. These are the mucopolysaccharidosis because of absence of or lack of hydrolases, lysosomal hydrolases. They are important in the degradation of glycosaminoglycans. Because of absence of hydrolases, the glycosaminoglycans accumulates in the various tissues that causes the symptoms. So enzyme replacement therapy and symptomatic treatment, physiotherapy, occupational therapy is important here. So main is the enzyme रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो जो एंजाइम डिफिशिएंट है वो दो अगर अवेलेबल है तो। okay? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। डाइटरी फाइबर्स, उनके नाम सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, गम्स, lactulose. Their mechanism of action: by absorbing the water, increases the viscosity of the GIT content and fermentation. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो नाउ सी द MCQ। अब अभी आपका टेस्ट है, आप खुद ही आपको खुद को असेस कर रहे हो। ओके, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन प्रेजेंट इन कॉर्निया, प्रेजेंट इन कॉर्निया। ठीक है, अगर एक ही आंसर सिलेक्ट करना है तो व्हाट शुड बी द आंसर? ए। एच बेस्ट टेस्ट पिक्रिक एसिड वाला यहाँ पे, हाँ पिक्रिक एसिड वाला। ड्यू टू निगेटिव चार्ज, करेक्ट। again negative repulsion due to presence of hyaluronic acid in glomerular membrane. Heparan sulfate, HS means heparan sulfate. Heat coagulation, H sulfur and biuret test. Remember, see, heat coagulation test for protein, H sulfur test is for the bile salt, and biuret test, it is a test for protein. But biuret test, remember, जो यूरिन में आता वो कम अमाउंट में रहता, जो ब्लड में है प्रोटीन वो ग्राम्स में है, 6-8 ग्राम नॉर्मल, 6 to 8 ग्राम। तो बायूरेट टेस्ट है ना, उतनी सेंसिटिव नहीं है। बायूरेट टेस्ट इट इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड, क्योंकि ग्राम में प्रोटीन रहता है ना, यूरिन में ग्राम में नहीं आता, यूरिन में मिलीग्राम में आता। तो उसके लिए टर्बिडीमेट्रिक प्रिंसिपल पे जो टेस्ट बेस्ड है वो यूज करते। बायूरेट टेस्ट यूरिन पे यूज नहीं करते। उसके क्लासिफिकेशन, जीएजी के क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं, इट इज their names first, their names, and then their distribution, their functions. Names, composition, distribution, function. Name, name, composition, distribution, function. Okay. Your answer is keratin sulfate. Glycosaminoglycan present in the cornea is keratin sulfate. Glycosaminoglycan responsible for transparency of the cornea is the keratin sulfate. अगर केराटिन ऑप्शन में नहीं है तो गो विद द डर्मेटन सल्फेट। अगर यहाँ पे दो आंसर लिख सकते तो केराटिन सल्फेट प्लस डर्मेटन सल्फेट। टेबल करके भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन टेबल का कंटेंट आप स्पेस बचाने की कोशिश करोगे जब आप टेबल कंटेंट में करोगे। करो टेबल कंटेंट में, लेकिन उसमें स्पेस मत बचाओ, उसमें हमको पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, टेबल करते वक्त भी। म्यूकोपॉलीसेकेराइड दैट डज नॉट कंटेन यूरोनिक एसिड रेसिड्यू इज, इसमें यूरोनिक एसिड नहीं रहता। एम्पियस म्यूकोपॉलीसेकेराइड दैट डज नॉट कंटेन यूरोनिक एसिड, आंसर इज यस डी, डी इज द करेक्ट आंसर। केराटिन सल्फेट में यूरोनिक एसिड नहीं रहता। और अगर डर्मेटन सल्फेट ऑप्शन में है तो में यल आइडोरोनिक एसिड रहता, लेकिन यल आइडोरोनिक एसिड यूरोनिक एसिड ही है। ओके, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस which is lysosomal storage disease occur due to abnormality in hydrolase, dehydrogenase, lipase, phosphatase.
Mucopolysaccharidosis, which is a lysosomal storage disease, occur due to abnormality in, yes, correct, all are correct, hydrolase enzyme. ठीक है. A 4-year boy with mental retardation, MR, mental retardation, डायसोस्टोसिस मल्टीप्लेक्स मीन्स स्केलेटल डिस्प्लासिया, थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता, स्केलेटल ग्रोथ जो रहता कम ज़्यादा रहता. सो डायसोस्टोसिस मल्टीप्लेक्स, कोर्स फेशियल फीचर्स, ये अगर आया ना कोर्स फेशियल फीचर, तो एक बार जरूर म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के बारे में थिंक करना है आपको. क्लियर कॉर्निया, सी हियर हिंट इज देयर, क्लियर कॉर्निया. व्हाट इज द डायग्नोसिस? एमपीएस टाइप 4. टाइप 4 मीन्स मॉर्क्यू. हंटर्स डिसीज, हर्लर्स डिसीज, झेलवेगर सिंड्रोम. झेलवेगर तो कंप्लीटली डिफरेंट है. झेलवेगर इट इज ए ड्यू टू peroxisomal defect. It is also known as peroxisomal biogenesis disorder. It is a severe form of peroxisomal biogenesis disorder. So there is defect in is it is protein targeting defect in which proteins are not targeted to the peroxisome. So it is because of absence of functional peroxisome. ये हमने सेल वाले चैप्टर में झेलवेगर को लर्न देखा था. ठीक है. तो क्लियर कॉर्निया इज देयर. व्हाट इज आंसर हियर? नेहाजीत, यदुश्री, गौरी, हर्षिता, ऋषि. रोजेरिया है वो. झेलवेगर मेक्स अस लुक वेरी ओल्ड. जनरली फीचर्स ऐसे ही रहते झेलवेगर में भी. ठीक है. लेकिन झेलवेगर के आपको फीचर कोई नहीं पूछेगा. झेलवेगर में आपको, सी सेल्वेगर इज द सेरेब्रो हिपैटो रीनल डिसीज. सेरेब्रो हिपैटो रीनल डिसीज फीचर्स ऐसे ही रहते लगभग. लेकिन झेलवेगर इज ड्यू टू absence ऑफ फंक्शनल पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोमल बायोजेनेसिस डिफेक्ट. प्रोटीन टारगेटिंग का डिफेक्ट है. प्रोटीन्स आर नॉट टारगेटेड टू द पेरोक्सिसोम्स. तो हियर आंसर इज, व्हाट इज आंसर? हर्लर है कि हंटर है? यस, हंटर करेक्ट. हंटर. हंटर को विजन लगती, क्लियर कॉर्निया, और एक्स भी लगती उसको शिकार करने को, तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. ठीक है. नाउ सी दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन. रीड दिस क्वेश्चन. ए 12-year-old child presented with distension of abdomen that may be due to hepatosplenomegaly, edema of feet, and stunted growth. On examination, short stature, hoarse faces means enlarged lip, tongue, facial hairs, elongated skull, short neck. There is corneal clouding. Corneal clouding. Hepatosplenomegaly is there, and X-ray shows skeletal deformities. Laboratory test: increase heparan sulfate and dermatan sulfate, and decrease iduronidase activity in the WBC. iduronidase activity. तो हर्लर है कि हंटर है? हर्लर है कि हंटर है? यस, हर्लर सिंड्रोम, MPS 1H, हर्लर सिंड्रोम. ओके. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में. LAQ करके भी ये क्वेश्चन आता है. फिर LAQ आएगा, फिर इस पे सब क्वेश्चंस रहेंगे, फिर GAG पे क्वेश्चंस रहेंगे. so that makes the LAQ long answer question. so if you are not sure about Hurler and Hunter, write down the mucopolysaccharidosis. It is a mucopolysaccharidosis. It can be Hunter or Hurler. Write down. सिर्फ एक लिख के मत छोड़ो, क्योंकि अगर वो हर्लर रहा और हंटर अगर उसका आंसर रहा तो आपका पूरा चला जाएगा वो. सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इज देयर, बट देयर इज नो कॉर्नियल क्लाउडिंग. देयर इज नो कॉर्नियल क्लाउडिंग. देयर इज डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ आइडुरोनेट सल्फेटेज. Time is different. Iduronate sulfatase. So here answer is Hunter. Okay. Here answer is Hunter syndrome. So this is all for the कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री. क्या क्या डिस्कस किया? क्या क्या डिस्कस किया? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रान, इनुलिन, काइटिन, ग्लाइकोजन, ये डिस्कस किए.
हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हाइलुरोनिक एसिड, हिप्पेरान हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, हिप्पेरिन, हिप्पेरान सल्फेट और केराटन सल्फेट हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। यहाँ पे एलएक्यू ये चैप्टर में से नहीं बनता है। एलएक्यू अगर आएगा तो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकॉन्स पे आएगा, एसएक्यू भी आएगा तो प्रिफरेबली ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकॉन पे मोस्ट प्रोबेबली आएगा। क्लिनिकल केस अगर डालना है तो हर्लर या हंटर की केस रहेगी, हर्लर की या हंटर की केस रहेगी अगर क्लिनिकल केस रहेगी। अगर क्लिनिकल टॉपिक चाहिए तो एग्जामिनर को तो पेपर सेटर को तो वो डालेगा डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स भी डाल सकता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी, डाइटरी फाइबर्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है। ऑड क्वेश्चन आया तो आइसोमर पे ऑड क्वेश्चन आ सकता, आइसोमर्स, डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ द मोनोसेकेराइड, इस पे क्वेश्चन आ सकता। फिर इसको छोड़ के अगर कोई क्वेश्चन है तो बी ए क्यूज है, नंबर ऑफ बी ए क्यूज आर देयर। एनुमरेट द कीटोज शुगर, enumerate the ketose sugar, why glycosaminoglycans are slippery in nature, then enumerate some glycosides, glycosides मतलब क्या होते हैं, when monosaccharides are attached with the phenol or alcohol they are known as glycosides। तो ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल है डिजिटैलिस, डिगॉक्सिन, जो कि कार्डियक फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। उसमें जो अग्लाइकॉन है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, वो रहता है स्टेरॉइड। तो जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, दे आर digitalis or digoxin. Then streptomycin is the glycoside. It is used for the treatment of tuberculosis. Then glucovanillin, vanilla flavor जो आइसक्रीम को vanilla flavor आता है, that is because of glucovanillin, which is the glycosides. Then कुछ inhibitors है, obain and chlorhexidine, like that. Okay, so remember streptomycin, remember digitalis, digoxin, remember glucovanillin. These are the examples of glycosides. Glucose means monosaccharide plus non-glucose moieties that include steroids, phenols, alcohols. Okay, this is glycosides. So enumerate non-reducing disaccharides. Enumerate reducing disaccharides. Enumerates the crystals given by the disaccharide, means lactose gives the powder puff, maltose gives sunflower shape, glucose, fructose, mannose gives needle-shaped osazones crystal. Okay. Properties of monosaccharide, Mollis test, Benedict test, Barford test, Selivanap, MBBS, Mollis, Benedict, Barford एंड द Selivanap test। इनके नाम सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो द प्रायोरिटी वाइज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकॉन फॉलोड बाय द homopolysaccharides। The difference between amylose and amylopectin of the starch. This is also BAQ 2-mark question. Okay. So this is all about the carbohydrate chemistry. From the next lecture we will start with the probably lecture रहेगा मंगलवार को, पर थोड़ा सा स्विच है, मंगलवार को रहेगा। तो ये वाले आने वाले सिर्फ। ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नाउ, start with the carbohydrate metabolism. This is very very important topic and the most common topic for LAQ, long answer question. So this is all for today. Thank you all of you.